Shrikant Dalmia ji, convener of Sitaram Devra Institute of Management Studies, Shri Vijay Singhal ji. We extend a warm welcome to all our dignitaries. We also extend a warm welcome to our resource person for today's national webinar, Mr. Hemant Rathod, who is a fitness expert and who will be engaging us in a session on the topic Fitness for All. We would also like to extend a warm welcome to all the respected principals from various esteemed institutions, faculty members, non-teaching staff, and participants from different fields, pan-India and abroad. We also welcome all our dear students who have joined us today for this national webinar. Now, as is a tradition in our college, let us start the program with the college prayer. I would like to invite Ms. Shruti Ranjade Madam, Associate Professor in Psychology and overall in charge of BM Ruya Girls College and the program coordinator of this 5-day program, which is organized to celebrate the occasion of International Yoga Day, to recite the prayer of our college. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही समसी, हर नाम में तू समा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांतिः। Thank you, madam. I would like to invite our respected principal madam, Dr. Santosh Kolkak. Her constant support and encouragement towards adopting to change has been a great source of strength to all of us. Her constant endeavor to motivate and infuse new vision in us has made this grand celebration of International Yoga Day possible. I now invite Principal Madam Dr. Santosh Kolkak to share her thoughts. Good evening and a warm welcome to you all. We are delighted to have with us respected members from Marwadi Sammelan, our President of Marwadi Sammelan, respected Shri Sushil Vyasji, Honorary Secretary, respected Shri Suresh Devraj, Convener of BM Ruya Girls College, Shri Shrikant Dalmia ji, Convener of Sitaram Devra Institute of Management Studies, Shri Vijay Singhal ji. Our today's distinguished guest, a renowned fitness expert and trainer, Mr. Hemant Rathod ji. Our colleagues and friends from various universities and institutions all over India, teaching and non-teaching staff from all the institutes, BM Ruya Girls College, Sitaram Devra Institute of Management Studies, our schools, our dear alumni and dear students. Today, I once again welcome you all in this webinar
which has been organized by the Cultural Committee, Sports Committee, and NSS unit under the aegis of Internal Quality Assurance Cell of Marwadi Sammelans, BM Ruia Girls College, and Sitaram Devra Institute of Management Studies. BM Ruia, on the occasion of International Yoga Day, BM Ruia Girls College and Sitaram Devra Institute of Management Studies welcomes you all. We believe that yoga is the key to health and happiness. We have started this week-long program since 17th June 2020. Today is the 4th day of this program, and we will learn about how important is it to ensure for everyone to be fit, especially in today's and post-COVID-19 circumstances and throughout our lives. According to Bhagavad Gita, yoga is the journey of the self, through the self, to the self. Dear all, we cannot always control what goes on outside, but we can always control what goes on inside. In today's time, today's lifestyle, physical activity and exercise is also important for everyone. Whether you are a child, an adolescent, or an adult, all need regular physical activity. Physical activity promotes good health, and you should stay active throughout all stages of your life. Understanding the benefit of physical fitness and knowing how active you should be in your life to maintain good health and improve your overall quality of life. Regular physical activity is important for physical as well as mental health. Engaging in regular physical activity can reduce your risk for many health issues and complications that can result in expensive medical care. It increases life expectancy and reduces the risk of premature mortality. Regular exercise and physical activity increase muscle strength, bone density, flexibility, and stability. A sedentary lifestyle and a lack of physical activity can take a toll on a person's body. Physical inactivity is associated with an increased risk for certain types of cancers, numerous chronic diseases, and mental health issues. Exercise, however, has been shown to improve mood and mental health and provides numerous health benefits. Being active means that it is easier to stay active as you get older. So we can take advantage of our life, for our physical fitness through regular physical activities. Regular exercises and physical activity promotes strong muscles and bones. It improves our respiratory, cardiovascular health, and overall health. Encourage yourself and your family to be more active and meet daily or weekly physical activity goals. Make exercises and physical activity a permanent part of your daily routine. हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, शरीरमाद्यु खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है. यदि हम धर्म में विश्वास रखते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें. शायर ने कहा है, कद्रे सेहत मरीज से पूछो, एक तंदुरुस्ती ही हजार नियामत है. अतः मित्रों, उत्तम स्वास्थ्य वह अनमोल रत्न है जिसका मूल्य तब ज्ञात होता है जब वह खो जाता है. अतः आप सब जीवन में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, जीवन का भरपूर आनंद उठाएं. इसी के कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें. धन्यवाद. Thank you, madam. We are privileged to have amongst us famous fitness expert, Mr. Hemant Rathod, as a resource person for today's national webinar on fitness for all. Mr. Hemant Rathod is a certified trainer
for last 15 years and has a vast experience in fitness training of people from all age groups. His expertise is in gymnasium training, aerobics, kickboxing, traditional yoga, power yoga, etc. Mr. Hemant has an impressive list of clientele to his credit. I now invite Mr. Hemant Rathod to share with us some of his fitness skills, yogic practices, and his thoughts on the concept of fitness for all. Over to you, sir. Thank you and welcome everyone. My name is Hemant Rathod. So, first of all, what is fitness for you? For me, fitness is what? To make yourself feel good, to make yourself nice. So, first thing first starts from just take a deep breath, keep a good smile on your face, and we'll start with some of body joint rotations, which starts from your ankle up to the neck. So I'll tell you how to do the body joint rotation, which will help you to lubricate your joint muscle. So at least you will benefit with the all your joints issues. Means you won't get any joint issue if you follow this every morning, doing all the rotations. So you just keep following me, do very calmly, keep breathing, and don't overforce yourself. Don't exert yourself. If you can't able to do that things, do it slowly. Somebody will able to do it partially. So do it slowly and just follow me. So this is the good full body rotation I'll show you on this screen. So everybody can see me. So first of all, we have to hold somewhere so you won't misbalance yourself, and take your right leg up, and you have to just rotate your ankle joint. So you can see me all. I'm just rotating my ankle joint. So my ankle joints get lubricated and it feels lubricant to my joint. So just rotate it like 10 times circle clockwise and 10 times anti-clockwise. Just keep breathing normally. Just be calm. It should be clockwise 10 times, anti-clockwise 10 times. Then take your left leg up. It should be clockwise 10 times and anti-clockwise 10 times. Then slowly rest your feet down. Both the feet should be together. Knee soft कर लो, घुटना थोड़ा सा bend करके. Rest your palm on your knees and you have to just rotate your knee. Rotate your knee. Rotate your knee circle clockwise. Clockwise. Just go as per your range. If you got any pain in the knees, don't move it. Just go slowly. Clockwise, anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise. Okay, then just relax. Do it slowly. Keep your legs wider. Keep hands on your waist and just move your hip joint. Just circle it slowly. Slowly करना है. Don't stop your breath. Don't stop your breath. Just do it slowly. This will help you to lubricate all your joint muscle, which is very essential for every day. Her age group के लिए it is very essential to make your joints lubricate. Circle it very closely, clockwise, anti-clockwise. Then slowly hold it on the one side. Just take your right leg up a little bit and just move your knee joint up and down. Just move your knee joint up and down. This is for your knees and it works on your hip. This is for your knees and it works on your hips. So your joint is getting lubricated. All you are working on your knees. Then just relax your right leg. Take your left leg up and just move it slowly up and down. Just move it 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 up and down. Now keep hands on your shoulder and circle it rotational wise, clockwise. So it lubricate your shoulder joint. Circle it.
circle it clockwise, anti-clockwise. Slowly move it forward. Keep breathing. Just relax your breath and keep breathing. Keep breathing. Just do it very slowly. Do it very slowly. Do it very slowly. Now both the elbows should come forward and just open it and close it. इसके साथ आप you have to inhale, exhale. So your lungs capacity also will get increased with the joint lubrication. So it should be inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now this is for your elbow. So you have to move just, it's called elbow flexion. Inhale, exhale. Just inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Then you have to move your wrist joint. Wrist is over here, so you have to move your wrist joint. Circle it properly. Circle it properly. Clockwise 10 times. Anti-clock 10 times. Just open your fingers, open your palms. Just punch and out. Just in and out. Open your fingers and close. In, out. In, out. In and out. Now interlock your fingers and you have to move your neck joint. So just chin up and down. Chin up and down. Do very calmly. Do softly. Don't stop your breath. You have to just doing inhale and exhale. So it should be go up. Chin should go down. The person who is not able to stand properly, overage people can sit and do this all these asanas. Like I am sitting right now in front of you. You can sit in front of sofa and you can do chin up and down. See, you can do chin up and down. People who are not able to do, they can do while sitting. Their chin and neck muscles should work. So it should be up and down, up and down. So you should do it 10 times. Then you have to take your ear towards the shoulder. So it should be like sideways. Ear to shoulder. Ear to shoulder. It should be ear to shoulder. It should be ear to shoulder. Just relax. Sit in a natural form. Just relax. Sit. ये सब joint rotations है which helps you to lubricate your joint. इससे आपके joint movable हो जाएंगे. So it will help you to start your day in the morning. So you can start your day every day morning. अगर आप ये करते हो तो definitely you won't get any joint issues. And ये सब 10 साल का बच्चा भी कर सकता है और 80 years का aged person भी कर सकता है. So this is a normal basic joint rotation movements. I think it should definitely help you all the peoples. Just relax and whenever you get up in the morning, this is the first thing you should do. So your body joint get lubricated and you can relax yourself. So it is movable. So you can start your joint to get moved in. Relax and then later on when you do all these things, the muscles are in a, when you get up from the sleep, the muscles are still in a relaxing form. It is in shortening form. जब हम लोग सोते हैं तो हमारे muscles थोड़े contract हो जाते हैं. So we have to extend it to its full level. So वो अपना काम करने के लिए ready हो जाए. So you have to do a little bit of extensions, muscles extensions. So it will help you to stretch your muscles. So I'll show you simple stretches. Simple stretches are you can sit down and you can stretch your shoulder. You can sit down and you can stretch your shoulder. Elbow को पीछे push करें, hand को diagonal form में डालें और अपने elbow को push करें दूसरे हाथ से. You should, तो आपको ये पूरा muscle stretch feel होगा. आपको पूरा ये muscle stretch feel होगा. So just don't stop breathe. Hold it for 10 seconds. Count करो 10 seconds तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax it. Relax it. Catch your breath. Do it slowly. एकदम आराम से breathing करो. दूसरा हाथ को diagonal form में डालो. And just push your elbow. So it will stretch in your shoulder muscles. ये पूरा muscles आपका stretch होगा. So stretch it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax it. हाथ ऊपर करके elbow पीछे सिर के पीछे डाल के इसको push करना है पीछे से. You have to push your elbow. आपके elbow को push करना है. So you will feel stretch in your tricep muscle. Push it like 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, relax 8. ये सब स्ट्रेचिंग करते टाइम मेक श्योर आप अपनी सांसें चालू रखें, कीप इट इन नॉर्मल फॉर्म, डोंट एक्सर्ट योर ब्रीदिंग, जोर से ब्रीदिंग लेने की जरूरत नहीं है, डू इट वेरी कामली, डू इट वेरी सॉफ्टली, दूसरा हाथ ऊपर, just relax, push your elbow back, stretch your tricep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax. Very good. Now interlock your fingers. आपके दोनों fingers को interlock करो and just round off your back. आपकी जो ये back की muscle है उसको you have to round off. तो hands को आपको पीछे push करना है और chest को contract करना है. So automatically your back will get stretched out. So slowly just push your hands forward, 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 and you can just feel the stretch in the back. Or 10 counts you have to breathe it. 1, good try. 2, 3, good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and just relax. 8, just stretch your one hand. I'm taking my left hand down. So take it, just touch your left hand on the floor. और दूसरे हाथ से आपके नेक को पुश करो. सो आपके जो नेक मसल्स है, किसी किसी को नेक इश्यू होता है, पेन होता है नेक में, तो यू कैन जस्ट स्ट्रेच इट आउट एंड यू कैन जस्ट पुश योर नेक ऑन द अपोजिट साइड. लेकिन उसके लिए आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है, यू हैव टू टच इट ऑन द फ्लोर एंड देन यू हैव टू पुश योर नेक ऑन द अपोजिट साइड. जस्ट ब्रीथ नॉर्मल, एकदम स्लोली सांस लेना है. ब्रीदिंग कीप नॉर्मल एंड होल्ड इट फॉर 10 काउंट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relax it. Slowly आपका right hand towards the floor touch करना है और stretch, push your neck on the opposite side. Push your hand with the neck. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax. Breathe it normal. You can see me as me. You have to sit in Sukhasana. This is called Sukhasana. So you have to sit in Sukhasana and just interlock your fingers back. और आपके forehead को towards the right नहीं लेके जाना है. आपके forehead को towards the right नहीं लेके जाना है. So go down. So it will contract your abs and it will stretch your lower back muscle. So you have to go down. Just go down. अगर आपका nose या आपका forehead knees को touch नहीं भी करता है, so you can go as much your range is. कोई इतना जाएगा तो भी चलेगा because their back is stiff. तो शायद से वो touch ना हो गए. लेकिन जैसे जैसे आप डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे, one day definitely you will able to touch your nose towards the knee. So you have to take your interlock your fingers, take your hands back and just go your forehead towards the right knee and take a deep breath over there. 10 times slowly breathing करते हुए 10 गिनना है. So it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Come up. Take 2, 3 breaths normal. Then again interlock it. Go towards your right side. Go it down. Do 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. अभी किसी किसी को यहाँ पे स्टमक पे क्रैम्प आया होगा, साइड में क्रैम्प आया, because your body has dehydrated. So क्रैम्प आने का रीजन वो होता है. So make sure if you are getting cramp, you stretch your hand up. So आपका क्रैम्प चला जाएगा. And if you still feel a cramp, you can have a sip of water. So always keep a bottle beside you. So if you feel, अगर आपको क्रैम्प आता है, किसी किसी को यहाँ पे जब नीचे जाएंगे तो यहाँ क्रैम्प आएगा, किसी किसी को बैक पे क्रैम्प आएगा. क्रैम्प मीन्स योर मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर. तो अगर क्रैम्प फील होता है, so just stretch it up like this, तो क्रैम्प चला जाएगा and have water. उसके बाद में you have to take your both the hands forward, take your hands down and you have to try to take your forehead down. Floor, अपने सिर को towards the floor लेके जाना है. तो you have to go down slowly, steadily. उससे आपका abs contract होगा and lower and spine will stretch properly. So you have to go down and just hold it for the 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stay there. 7. Breathe normal. 8, 9, and relax. This is the normal stretches which will definitely help you to start your day in the morning. This hardly takes 5 to 6 minutes, and if you do this every day, इससे आपको definitely 110% you will get benefit of these rotations and stretches to start off your day.
Now we'll go to a breathing session. What is the breathing? सांस कैसे लेते? सांस, when you inhale, your stomach should come out. When you inhale, your stomach should come out. बहुत सारे जन ऐसे हैं कि जब वो सांस लेते हैं तो उनका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो इनहेल करते हैं तो exert करता है. तो make sure the breathing pattern should be just interlock your fingers, rest it on your palms, rest it on your palms like this. जब आप सांस लो, so you should, आपका पेट आगे आना चाहिए. When you inhale, your stomach should be filled with an oxygen. Your lungs should be filled with an oxygen. So when you inhale, it should like your stomach should fill with an oxygen. आपका पेट ऑक्सीजन से भरना चाहिए. And when you exhale, आपका पेट खाली होना चाहिए. It should go inside. This is the exact breathing technique. Some of must be breathing very correctly. कोई है जो small breathing करता है, it's fine. लेकिन breathing pattern is like inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. So just interlock, inhale deeply, exhale slowly. Just slow down your breath. Exhale. When you exhale, your stomach should get contracted. Inhale deeply, exhale slowly. So you should like close your eyes, inhale deeply, exhale slowly. This exercise will help you to give a good oxygen to our body in the morning form, which is very much required in the morning. Subah body has to get regenerated to itself. So that's why when you deeply inhale in the morning, your lungs gets warmed up and you can start your day with a full charge of things. So you have to just inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Just inhale, your stomach should come out. Exhale, your stomach should get contracted. Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. So this is normal breathing techniques which will definitely help you out. Now after this workout, if you are doing more workout, you are fitter and you are going for the more workout, so basic thing is what you should have water in between. तो आपके पास हमेशा पानी का एक बॉटल रखो and you should have water in between, because जब हम लोग workout करते हैं, so body gets starts sweating and body needs a water fluid to hydrate itself. So slowly and steadily you can have a water in sip in between. There is not in it you should be doing continuously. Continuously नहीं करना है. You have to calm down yourself and do the workout, because we are working with the age of 10 also and we are working at the age of 80 also. So this is for everyone and this is the basic fundamental exercise which will definitely help to each and every age group. So just calm down yourself and do the things. This is the basic exercise which will help you, and it hardly takes 5 to 10 minutes in the morning to start up your day. Then we can go further with the Surya Namaskar poses. Now Surya Namaskar is what? Everybody can't perform a Surya Namaskar because in certain age somebody has got a back issue. किसी को knee का joint पता है, arthritis है, तो they can't bend your knee. किसी को shoulder frozen shoulder है, तो उनके हाथ ऊपर नहीं जाएंगे. किसी को बहुत सारे issues होते हैं. So it is not compulsory कि shoulder namaskar should be followed perfectly by each and everyone. You can, आज की तारीख में ऐसा सिस्टम है कि you can go as per your range. अगर आपको frozen shoulder है तो you won't able to rotate your shoulder. So आपके हाथ भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे. So make sure when you do the Surya Namaskar, आप एकदम partially करें उसको. Go up to the range. On the first day only आपको अपने body को push करने की जरूरत नहीं है. Don't overstretch your body. Do it partially, as per your range. Do it slowly. अगर young age group के हैं who are very fit, so they can do more Surya Namaskar in one set. If the people is aged, they can do one Surya Namaskar and they can rest for a while. एक सूर्य नमस्कार करो, 2 मिनट रेस्ट ले लो. एक सूर्य नमस्कार करो, 2 मिनट रेस्ट ले लो. So ऐसा करके हम लोग अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं. और we can do one day a 70-year-old guy also can do 5 Surya Namaskar together. The thing is what? Just know your body limit and go as per your range. So I'll show you one Surya Namaskar. You can follow it me, but if it is possible, go as per your range. Don't over push your body. I don't want any injuries right now in the webinar. So make sure you do it very slowly and calmly. I'll show you one Surya Namaskar so you can follow me.
So we'll start with single Surya Namaskar. You have to inhale deeply, slowly. You have to inhale slowly. हाथ को दोनों ऊपर एक्सटेंड करना है. Exhale down, relax. See अभी मैं I can keep my hands up. मैं अपने दोनों हाथ ऊपर ले पाता हूँ. But the people who are suffering from the shoulder injuries, so they can't take your hands up. तो आप यहाँ से start कर सकते हैं. No need to take your hands up. आप यहाँ से start करें. This is the starting point. Who have got shoulder injuries, who can't take your hands up, and this is the starting point. Who can take the hands up? So this is the starting point for the fitter guy, and this is the starting point for the old ages guys, and who can't keep your shoulders, who can't take their hands above the shoulder level. So this is the starting point for the beginner. This is starting point for the beginner. So ये है first point. This is first. This is first. ये first pose है. This is first standing pose. It is also called Tadasana. Now after doing this, जो partially कर रहे हैं, they can extend your back like this. और जो साथ में जा रहे हैं, they can keep the hand up and they can extend your back like this. So this is the first pose for the beginner. This is beginner. This is second pose. Back extension, what is called. और ये जो starting, जो अपना हाथ ऊपर में कर रहे हैं, उनके लिए beginning pose ये है. वहां से you have to go down. The person who is taking your hands up, they can go directly down like this, slowly. So और जो यहाँ से कर रहे, they can take their hands directly like this. And the people who are not able to do standing at all, so they can use like. So people who can't do standingly, they can do on the stool also. Stool पे बैठ जाओ, आप ऐसा हाथ कर सकते हो, ऐसा हाथ कर सकते हो. तो this is the another variation of सूर्य नमस्कार, जिसको seated form में बोलते हैं. This is the standing form and this is the seated form. जो people, old age people who have got arthritis, they can't stand, वो बैठ के आराम से सूर्य नमस्कार ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं. They can go down like this. Okay, so this is for the higher level of things. This is, and then if people are old ages, they can do Surya Namaskar like this. So this is the one, this is the second, this is the third. Back extension, इसमें you can do like back extension in this. You can do back extension in this. यहाँ पे भी आप back extension ऐसे बैठ के कर सकते हो. Okay. Second pose will be, third pose will be, you can go down directly like this. You can go directly down like this. और जो बैठ के करते हैं, वो ऐसे bend कर सकते हैं forward को. Then you have to come in a lunge form. The people who are doing standingly, they can touch their hand on the floor and they can take your left leg back lunge. So this is called lunge form. This is called lunge form. This is called lunge form. अभी सबके लिए ऐसे possible नहीं होगा. So they can just touch your knees down and you can do it easily like this. They can touch your knees down and you can do easily like this. Okay. जो बैठ के कर रहे हैं, the people are doing sitting सूर्य नमस्कार, वो अपना एक पैर उठा के ऐसे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. This is form for you. The old age people who can't perform standing, they can just pull your leg like this up. The people who are doing standing, once you do lunge form, आप अपने दो पैर भी पीछे ले लो. And this is called mountain pose. It's called mountain pose. इसको mountain, दोनों पैर साथ में करके, this is called mountain pose. The people who are doing standingly, this is just, they have to touch both their hands down on the floor, and this is mountain form for them. Again, just I am showing both the ways. When you do in the mountain form, दोनों पैर पीछे लेके, rest your knees down and you have to take it down. आपकी chest को towards the floor लेके जाना है. Towards the floor. Go your chest towards the floor like this. जो seated form में कर रहे हैं, they can just hold it inside like this and they can pull your chest towards the knee. So they can pull it like this. Okay. Then slowly, ये आसन के बाद just lie down and do back extension.
पीछे आना है. Do back extension, what we call cobra pose, bhujangasana. So you have to lie down and do back extension. Again you have to repeat the same. Take your left leg forward again. Take your right leg forward again. And just come directly up. Do the back extension. Again down. नीचे. जो बैठ के कर रहे हैं उनके लिए ये आसन के बाद just come up, pull this knee. जाते टाइम हम लोग ने ये पैर खींचा था, आते टाइम ये पैर खींचो. Keep it down, hands up, do the back extension and relax yourself. So this is the Surya Namaskar. I have shown you for both the age group, means like जो बैठ के करना चाहते हो बैठ के भी कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, और जो खड़े रह के करना चाहते हैं वो खड़े रह के भी सूर्य नमस्कार करते हैं. So this is the form you can use either standing, either seated. Body is not same for everyone. Everybody has its body limit. सबका लिमिट बॉडी का अलग अलग है. So we have to go as per our range. मैंने अभी जो सूर्य नमस्कार बताया, standing can be done by the fitter person. अगर थोड़ा 19-20 है, so you can do it as per your range. और जो सूर्य नमस्कार बैठ के करना चाहते हैं वो बैठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. So this is simple सूर्य नमस्कार. Don't over push yourself. आप अपने लिमिट को पुश मत करिए बिगिनिंग में. Go calmly, keep breathing and relax yourself. Relax yourself. After this, just sit for a while and drink water, have a sip. Then we can go to the another session. We all are aware of things. We have done full body rotations, we have done stretches, we have done Surya Namaskar. I have shown you breathing techniques. हम लोग पूरी बॉडी का वर्क करते हैं, लेकिन the main thing जहां से हमारा फिटनेस दिखता है, that is from your face. So if your face is also fitter, you look more fitter, because सब हमारा face ही देखते हैं. So there are some workout which can give definitions to your face and you can look more, which will help your skin to glow. So I'll show you some of the facials workout which will help you out for your glowing skin. तो facial workout में होता है पहले just normal बैठ जाओ, interlock करो fingers को, you have to just do it. आपके fingers को interlock करके सामने रख दो, you have to check. अभी बहुत सारे जन को यहाँ पे issues होता है कि we have got double chins over there. यहाँ पे double chin होता है. So make sure ये double chin जाए कैसे. मुझे बहुत जन पूछते हैं कि double chin सर कैसे जाएगा. तो बहुत ही simple है, it's very funny. आपको भी ये करने में बिल्कुल मजा आएगा. और फनी वर्कआउट है, बट इट इज गुड फॉर योर फेशियल. इट इज गुड फॉर योर फेशियल. सो आप स्लोली ऊपर करिए अपना चीन को, और आपको खाली अपना माउथ क्लोज एंड ओपन करना है. ओपन क्लोज, ओपन क्लोज. तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, विच इज गोइंग टू वर्क फॉर योर डबल चिन. तो आपको ये जो डबल चिन आता है आफ्टर 30-35 एज के बाद, वो आपको नहीं आएगा, और यहाँ का आपका स्किन टाइट हो जाएगा. सो यू हैव टू जस्ट इंटरलॉक, चीन ऊपर करना है, एंड यू हैव टू चीव लाइक दिस. किसी किसी को हंसी आएगा, सब हंसेंगे, हमको खुद को भी हंसी आएगा, but this is for your face workout. So make sure you enjoy the workout, and workout is what? Just enjoying and doing for yourself. So when you do it, just enjoy yourself. You'll feel up, but you can do, take your chin up and just chew. One, mouth open and close, you have to do. You can do 10 times like this. This is 10 time for the beginning level. I'm saying जैसे जैसे आप improve करेंगे, you can increase the counting also. You can go up to 15, you can go up to 20. Slowly you can increase the set also. तो ये तो यहाँ पे center की बात हो गई. Once again you can see your chin should be go up and you have to just open, close, open your mouth and close. तो आपको यहाँ पे stretch feel होगा, which will tighten your skin on the neck. It is the same way. आपकी जो neck है ये center है, तो you have to push it in a diagonal way. मतलब आपका ear है वो शोल्डर की तरफ जाना चाहिए, ऐसे डायगोनल फॉर्म बोलते हैं उसको. तो you will feel stretch on your side. ये जो साइड का गला है वहां पे स्ट्रेच होगा. एंड द सेम वे यू हैव टू जस्ट ओपन एंड क्लोज. तो आपके ये जो साइड है वो टाइट हो जाएगा. ये स्किन टाइट होने के लिए यू जस्ट हैव टू टेक योर नेक इन अ डायगोनल फॉर्म टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, एंड यू हैव टू जस्ट ओपन क्लोज, ओपन क्लोज. तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, एंड विच इज डेफिनेटली गोइंग टू टाइटन योर स्किन ऑन द नेक मसल टुवर्ड्स द राइट. Again you have to do on the other side, same way, just open, close, open, close. तो आपका ये पूरा जो फ्रंट है डबल चिन है उसका मैंने वर्कआउट बता दिया. Once again you can see it and try it out. The thing is what, just center should be like this, open and close. तो ये सेंटर वर्क करेगा.
When you go in one side, तो one side का neck work करेगा. This neck will work. When you go on the other side, this neck will work. तो ये rotation normal for your neck, which will tighten your skin and just give you a readout of double chin. Okay? किसी किसी को यहाँ पे बहुत चीन पे फैट होता है, किसी किसी को वाटर रिटेंशन होता है, स्किन वाटर पकड़ के रखता है, तो देयर फेस लुक्स फ्लबी, थोड़ा जाड़ा जैसा लगता है, सूजा हुआ लगता है. So that because the water, the skin holds the water. It's called water retention. So it's a normal thing is what you have to just smile and just squeeze your. You have to squeeze your face. Chin को squeeze करना है inside. You have to smile and squeeze. With the smile and squeeze. तो यहाँ से आपका जॉ लाइन दिखने को चालू होगा, and which is really looks good. Your skin is going to stretch properly. सब detox हो जाएगा and your skin will start glowing. So it is very simple and very funny workout, but you can enjoy this workout with me. Just smile. Smiling is a good thing for the health. So just smile and squeeze. Just smile and squeeze. So you can do this 10 times. आपको ये 10 बार करना है. इसमें भी breathing pattern should be very normal. कुछ exert नहीं करना है. आपकी breathing को high नहीं जाना है. We are going very slowly, very steadily. So just smile and squeeze. Just smile and squeeze. तो ये आपको 10 टाइम करना है. Smile, broad smile होना चाहिए. Happily smile होना चाहिए. तो smile and squeeze. Smile and squeeze. So you have to broadly smile and squeeze your chins. And then आपका जो फेस है, जॉ लाइन है, और जॉ को लाइन को आपको जैसे हम किसी के साथ गुस्सा करते कैसा करते हैं मस्ती में, you have to take it one side, which is quite funny. I hope you also must be feeling it funny only, but think this really works. हम लोग जब भी किसी के साथ ऐसा करते हैं तो समझो हमारा फेशियल वर्कआउट हो रहा है. तो this is every single time whenever you are doing with this someone ऐसे ऐसे, so means you are working on your face. So right now you are knowing you are working on your face, so you have to do this one side. So this will help you on this side jaw line. Then same way you have to work on your left side. So you have to do on the left side. So this will working on your chins. किसी को बहुत जाड़ा है, water retention है, तो ये सब chin facial workout है जिससे आपका bloating जो रहता है, skin water retention वो निकल जाएगा. And this is the more thing what I do. You have to smile and this is squeeze. तो यहाँ का ऊपर से लेके आपका पूरा face you have to expand your face. You have to smile and squeeze. Shock कैसे होता है, किसी को देख के अगर हम लोग shock करते हैं, so it's funny but you have to do it. Smile and squeeze. Smile and shock. Smile and shock. So ये आपके जो eyebrows है, यहाँ पे भी जो water retention होता है, ये सब आपका down हो जाएगा with this simple workout. With this simple workout, this will all your face water retention, swelling कम हो जाएगा, and your face will really look and tone. आपकी skin पे जो wrinkles होते हैं वो भी कम हो जाएगा इस सब facial workout से. Then you have to take your three fingers. You have to take your three fingers. You have to take your three fingers. यहाँ पे eyes के नीचे lay करना है. You have to pull it little bit downward, and you have to lift your eyebrow up like this. You have to lift your eyebrow up like this. तो आपके यहाँ पे जो highlights है, यहाँ पे है, वो सब tone होने के लिए काम हो जाएगा. This will start toning your forehead skin. So you have to just take it up, down, up, down, up, down, up, down, up and down. Then you have to this. This is the normal facial workout. ऐसी बहुत सारी workouts है, slowly and steadily. आपको कुछ भी queries है, you can ask me on the YouTube. Any of your questions, I am ready to answer it. I am here to answer it for all your questions. So make sure this is a normal workout for your facials. Then you have to rub your. This is the rub your palm and just give warm heat to your eyes, which is useful for your eyes. Your eyes need a heat. This is the main thing which you need. So just rub your palm. When it gets heated, उसमें power आ जाता है. It generates the energy heat and it is transferred to your eyes, which is very good for your palm. से आपकी heat transfer हो जाएगी आपकी eyes को, which is very good for you. This is the simple workout which I am showing from your toes to the upper body. Right now, only workout won't help you. Workout के साथ हम लोग को कुछ immunity system भी build करने का, क्योंकि due to COVID pandemic, because we are right now
सबको कोविड का टेंशन है, व्हाट इज कोविड 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 एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो देयर आर सर्टेन फूड्स व्हिच कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी मस्ट बी नोइंग लाइम, नींबू पानी पियो, विटामिन सी मिलेगा, इट इज वेरी गुड टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। देन फ्रूट्स, पीपल यहाँ पे आपने न्यूज में देखा रहेगा, ऑल आर टेलिंग हैव मोर फ्रूट्स, हैव मोर सीजनल फ्रूट्स, लेकिन कौन से फ्रूट खाने हैं विच कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम? तो फ्रूट्स वी कैन यूज लाइक ऑरेंज, स्वीट लाइम, ग्रेप फ्रूट्स, आप ग्रेप ले सकते हो। सीजनल फ्रूट आर वेरी गुड, बट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होता है? सिंगल डे में तो होगा नहीं, एवरी डे थोड़ा 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 करके यू हैव टू बूस्ट योर एनर्जी। डोंट हैव वन डे ओनली, एक दिन में सब खा लोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग इन वन डे, नॉट पॉसिबल फ्रॉम एनी साइड। भगवान ये आप भी आपको बोलेगा तो भी पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर हैव एज पर योर रेंज। अगर किसी को खट्टा खाने से घुटने में दुखता है, किसी को लाइम से खट्टे में दुखता है, घुटने में दुखता है, कमर पेन होता है, किसी किसी को स्वेलिंग आ जाता है लाइम खाने से, तो लाइम मत लीजिए। देयर आर अदर फ्रूट्स आल्सो व्हिच कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। तो अदर फ्रूट्स आर लाइक पपाया खा सकते हैं आप, व्हिच इज आल्सो हेल्प यू टू इन, इफ अगर आप डायबिटिक हो तो पपाया विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर डायबिटिक लेवल। देन यू कैन हैव वाटरमेलन इज प्योरली वाटर, 90% वाटरमेलन होता है पानी, वाटरमेलन इज 90% वाटर। तो आप जब वाटरमेलन खाते हो, इफ यू डू द वर्कआउट, आपकी बॉडी में सोरनेस आते हैं, मसल सोर्स हो जाते हैं, सो वाटरमेलन विल हेल्प यू टू रिड्यूस दैट सोरनेस। देन यू कैन हैव बेल पेपर मीन्स हमारे हिंदी में बोलेंगे तो शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फूड to make your immune system strong. Then you can have dahi is very good for you, yogurt is very good for you. अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर आप कुछ नट्स खा सकते हो, तो नट्स में आप खा सकते हो वॉलनट। काजू मत खाना क्योंकि काजू इज हाई इन कोलेस्ट्रॉल, दैट विल हार्म यू इन फ्यूचर। सो काजू को अवॉइड करके हैव आलमंड्स, 2-3 बादाम ले लो, 2-3 अखरोट ले लो, वॉलनट्स यू कैन टेक इट, पिस्ता ले लो 2-3। So this type of nuts will help you to improve your immune system. You should have green leafy vegetables in a lunch. So you can have broccoli, you can have जिनको थायराइड है तो ब्रोकली नहीं खा पाएंगे तो they can have पालक, spinach they can have. Then you can have sunflower seeds in early morning. That also really helps you to make your immune system strong. Then you can have carrot juice you can have. You can have some of किसी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गिव देम विटामिन सी का टैबलेट, so it is okay to have in vitamin C tablet is fine. You can have flaxseed which is good in omega 3 fatty acid जो बोलते हैं, which is also good for the cholesterol. आपका कोलेस्ट्रॉल भी उस पे कंट्रोल आ जाएगा and it is very good for the immune system also. So you can have flaxseed which is very good source of omega 3. So this is the simple good food you can use at home and you can improve your immune system. After that, see अभी हम घर पे right now because of COVID we go to doctor if you got cold cough है, अगर हमको थोड़ा कफ हो रहा है, हमको थोड़ा कंजेशन है गले में ये वो, तो it is not the symptom of cough. लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको रिसेंटली टच नहीं करते, they can just give you a medicine from long and people are avoiding. People अभी डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं, they can take remedies at home only. So I'll give you simple remedies which you can do while you are at home only. अगर आपको सर्दी है, if you are feeling cold, so you can have carrot, pineapple, ginger and garlic. ये 4 चीज का आप जूस बना लो, एक शॉट, इतना सा शॉट्स खाली पी लो, which is very good for the cold. अगर आपको सर्दी है, if you feel like an cold, सर्दी है, so again I am telling you, गाजर, पाइनएप्पल, जिंजर एंड गार्लिक, ये 4 चीज का जूस बना के आप छोटा सा एक शॉट, जो छोटी ग्लास चाय का कप होता है उससे भी थोड़ा कम, एक शॉट्स पी लो, विच इज हेल्प यू टू फॉर द कोल्ड थिंग्स. अगर आपको हेडेक है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है, सेराडोन है, ये एनासिन है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, अगर आपको हेडेक है तो यू कैन हैव एप्पल, कुकुम्बर, काले, जिंजर एंड सिलेरी, ये चारों चीज का जूस बना दो एंड यू कैन हैव one shot, so that will help you to get out of your headache. अगर आपको हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, so
definitely you must be taking a medicine in the morning. Some must be taking in empty stomach. कोई लेता रहेगा after food. So अगर आपको high BP है, so you can take बीट ले सकते हो, एप्पल, कुकुम्बर, जिंजर, ये चारों चीज का जूस बना लो. Have it in the morning. That will definitely help you to take your BP down. So these are some of the juices will definitely help you, and this is all our home remedies. मैं अभी तक डॉक्टर के पास जाने को आपको मना कर रहा हूँ, और आपको बेसिक थिंग्स मतलब कोल्ड के लिए बोल दिया मैंने आपको हेडेक है, आपको हाई बीपी है, तो देयर आर मेनी जूस वेयर यू कैन फाइंड एंड यू कैन मेक इट एट होम ओनली, which is are made from the vegetables, and you can take that shots, you can take that juice, and you can just take care of yourself. उसके बाद में हम लोग आते हैं फॉर योर आईज. आपकी आईज को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है. अभी आज की तारीख में तो बच्चों को भी 5 साल की एज में ही चश्मा लग जाता है. तो इफ यू वांट टू आई स्ट्रॉन्ग, so you just simple workout which will help you to strong your cornea. So just take both the hands up and just watch in your thumb. आपकी दोनों आंख आपके thumbs को देखनी चाहिए. तो just watch your thumb and just आपका एक right thumb जैसे ऐसे जाएगा, वैसे वैसे आपके आई बॉल भी वही right thumb को देखते जाएगी. तो just take it up and take it down. तो ऐसा आपको 5 times towards the right. Both the hands को forward लेना है. See at your right thumb and just take it in a diagonal form. और जो हाथ आप ऊपर ले रहे हो आपको वही थंब को देखना है. So that will help you to strong your hand. So there are like variations like take it towards the right and take it in the center. Take it towards the right and take it. हाँ, तो अगर आप थोड़ी देर उसको होल्ड करोगे तो you feel pain in your eyes also. लेकिन वो पेन का मतलब है you are working on your eye muscle. So it should be up and down, up and down. फिर ये 2 टाइम, 1 and 2. वेरी गुड. स्लोली एंड स्टेडीली आपको हाथ को डायगोनल फॉर्म में, फिर आपको वही हाथ नीचे लेके जाना है. डाउन एंड अप. योर नेक शुड बी स्ट्रेट. आपका फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन आई बॉल शुड मूव. सो इट शुड बी डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. अगेन ऑन दिस साइड, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. फिर दोनों एक ऊपर, ऐसे ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे, फिर दूसरा हाथ नीचे लेके आना है, वापस ऊपर. तो दिस इज द बेसिक सिंपल एक्सरसाइज which will help you to strong your eye muscles. So it should be, again I am showing you, diagonal 1 then center, diagonal 2 and center. X form में लेके जाना है, and center, up and center, then ऊपर and center, then नीचे and center. So this will help you to strong your eye muscle. Again after doing eyes workout, you have to just rub your palm. अपने palms को rub करना है, energy increase करना है. You will feel energy warm and just relax your eyeball. So it will get warmed up. Yes, very good. Just again rub your palm and just relax your eyeball. So this is the simple workout for your eyes. The same way, fasting is very good for our body. You should fast at least once in a week. Fasting, I am not saying कि fasting का मतलब खाना नहीं खाना है, नहीं. You should fast, but in such a way your stomach should get relaxed from the work, digestive system को relaxation मिले. इसलिए make sure you do fasting once or twice a week. Fasting करना कैसे है? Fasting means not in a day fasting. Fasting होता है रात को भी. So when you, अगर समझो आपने खाना खा लिया शाम को 7 बजे, खाना खा लिया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर आप सुबह 7, रात को 7 से सुबह 7, तो इट काउंट्स अप टू 12 आवर्स. तो 12 घंटा वो 7 से 8, 9, मतलब आप 14 घंटा फास्टिंग कर रहे हो. वो टाइम पे आपको कुछ भी सॉलिड फूड खाना नहीं है. When you are doing fasting, आपको कुछ भी सॉलिड फूड खाना नहीं है. You have to drink only water, or you can have a lemon water. So at least you will hydrate yourself. तो जिसको डायबिटिक प्रॉब्लम है, अगर आप लाइम जूस भी पीते हो तो बॉडी को शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, and your stomach will get relaxation form. Fasting is not done in the daytime only. It can be done in the night time also. तो fasting होता है एक तो 12 घंटे का, दूसरा होता है 12 hours का, then 14 hours का होता है, then 16 hours का होता है. I am guaranteeing you, अगर if you are doing fasting twice a week, मतलब आप रात को 8 बजे खाना खा लो, 8 बजे से नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है. नो सॉलिड फूड,
You only have to drink a water. You can have a juices in the morning. So that will help you to detox your body. आपकी body detox हो जाएगी and it will clean your stomach, which will feel you again good. आप again energetic feel होगा and then again you can do your daily workout how you are doing it. So this is the simple thing I can show you and I can explain you from one side. Now, if you got any questions regarding to fitness, you can ask me, ma'am. Thank you, sir. Okay. It was a great motivating hands-on session. I'm really impressed and very much stunned how with this simple exercises, we can really enjoy, have a good time, at the same time ensure that we maintain our fitness. Yes. So the importance of fitness with this perspective and how it can be attained with simple exercises. So you have showcased it very nicely, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Now we will take some questions from our YouTube and Zoom audience. Sir, I have some questions over here which have come. So some people are asking, can you suggest some exercises which have to be done for lowering high blood pressure? For lowering high blood pressure, so you have to Yes, just sit in a, you have to just sit in a Vajrasan form. Just sit in a Vajrasan form. Vajrasan form आपको पता होगा, like bending your knees. ये पैर है, you have to sit like this and sit in a Vajrasan form and take a deep breath. अपने हाथ को पीछे एंकल को होल्ड करना है and take your forehead towards the floor. कोई है जिसको नी का इशू है, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, तो they can sit on the pillow. They can take a pillow. They can take a pillow like this. किसी को बैठने नहीं जमेगा, तो take a pillow like this. Sit on the pillow ताकि आपके एंकल जॉइंट को रिलैक्सेशन फॉर्म मिले. होल्ड योर एंकल, पीछे से आपका हैंड से एंकल होल्ड करो एंड जस्ट गो डाउन स्लोली एंड टेक अ डीप ब्रेथ. अगर आप 10 ब्रीदिंग, आपके स्टमक पे थोड़ा प्रेशर आएगा, आप स्लोली 10 ब्रीदिंग्स फॉरवर्ड करोगे. सो स्लोली एंड स्टेडीली it will help you to get control on your blood pressure thing. It is very slowly. अगर आप नहीं बैठ सकते हो फ्लोर पे, ऐसे नहीं बैठ सकते हो, तो take a pillow, use a pillow. Don't over stress you. Don't take stress. Just take a pillow, sit on the pillow, hold your ankle behind. Take your hands down and just go down slowly like this. ऐसे करके आपको 10 breathings करना है, which will definitely help you out to take your blood pressure down. So this is very simple exercise. One exercise will help you slowly आपके breathing techniques को improve करना है, which will definitely help you to lower down your BP, blood pressure. अगर आप बैठ नहीं सकते हो, तो don't force yourself. Take a pillow and sit and do it very calmly. Okay? Sir, there are questions which we have over here. Can you suggest some exercises to curb acidity? To cut the acidity. Okay, so acidity is related to the digestive system. अगर acidity है आपको, means it's all the problem with your digestive system. Correct? You are asking about the acidity. So acidity है अगर, तो just sit in a सुखासन form में बैठ जाइए. आपके जो palms है दोनों, आपके fingers को close कीजिए. Keep it on your pancreas. आपका जो pancreas है, pancreas को hold कीजिए और just go down. जब आपके stomach को punch करेगा, when you just go down and go down and do deep breathing. 10 time आपका breathe ऊपर नीचे करो. Take a deep breath and down. Inhale, exhale, inhale, exhale. So that will definitely help you to take down your acidity. तो ये एक है. Again I am telling you, सुखासन में बैठ जाओ. आपके दोनों palms को बंद कर लो. Just hold your pancreas. आपके pancreas को hold कर लो and just go down. आपके stomach को pinch करेगा. आपके pancreas को ये fingers है ना, वो hurt करेगा और 10 breathings कर लो, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा प्रेशर पॉइंट मिलेगा एंड योर एसिडिटी विल गो डाउन. तो ये एक आसन में आप बैठ सकते हो. दूसरा आसन ये है, अगेन यू कैन सिट इन वज्रासन फॉर्म. अगेन यू कैन होल्ड योर पैनक्रेस, गो डाउन. अगेन यू विल टेक अ डीप ब्रेथ. 10 टाइम ब्रीदिंग करो. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. सो इट विल प्रेशर पॉइंट योर डाइजेशन. पैनक्रेस को प्रेशर पॉइंट करेगा, आपकी एसिडिटी लेवल डेफिनेटली नीचे आ जाएगी. Again you can do both the legs forward. आपके दोनों पैर पीछे लो, हाथ को ऐसे पीछे जान दो, थोड़ा पैर पीछे लो, come forward, पीछे जाओ, come forward. When you go back, inhale. When you come forward, exhale.
So this is are the three simple exercise which will help you to lower down your acidity. First thing is what? Seated, palms को close करना है, pancake को hold करना है and go down and 10 time breathe करना है normal. तो it will pressure point your pancreas system और उससे acidity level नीचे आ जाएगा सर. Okay? Yes, sir. Thank you very much. Sir, there are a few more questions. Yes, sir. Is there any exercise in yoga which can be done for slip disc problem and back pain problem? For your back pain, sir. And slip disc. Which back pain, sir? Lower back pain or what? Sir, lower back pain and slip disc problem. Lower back pain के लिए sir best workout है. Just lie down on the floor. नीचे आप सो जाओ, floor पे सो जाओ, and do back extension, sir. Up and down, up and down. Everybody is knowing about the भुजंगासन. इसको भुजंगासन बोलते हैं. अपने पेट के बल सो जाओ. हाथ को यहाँ पे नॉर्मल रखो. Just lie down like this. आपको ऊपर जाना है and नीचे आना है. ऊपर जाना है, नीचे आना है. So this is the one best workout for the back. दूसरा workout है simple, which can be also performed by everyone, all age group. आपको cat form में आना. जैसे हम लोग 4 पैर पे आते हैं, दोनों नीज नीचे फ्लोर पर, दोनों हाथ फ्लोर पर, और आपको चीन ऊपर करना है. जब आप चीन ऊपर करोगे, your back will be round off. आपका बैक ऐसा रहेगा, and when you stretch it, ऊपर जाएगा. So it is called cat and camel pose. So you can do like this. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So that will help you to just give movement to your spine, and that will definitely help you to just give relaxation to your lower back pain. Other exercise is lie down on the floor. Floor पे आप सो जाओ back पे. Keep your hands side and knees को एक side लेके जाओ. Center. Take your knees one side. Center. Take your knees one side. Center. Take your knees one side. Center. So this is the three simple workout which will definitely stretch your back and it will relax your back. Okay, sir? Yes, sir. Thank you very much. Sir, if you can take one more question. Yeah, sir. Any yoga exercise for lowering, for the people who have lower blood pressure, the people who are suffering from low BP? People who have low blood pressure, sir, first thing of all, when you do the workout, आपकी breathing pattern पे, you have to just concentrate on your breathing pattern. Before workout, you should always have something and then you start the workout. अगर आपका blood pressure low का issue है, so you have to have something and then start a workout. इसमें भी the same thing. I showed you the Surya Namaskar. दोनों हाथ ऊपर करके, just go down, one side this side, one time this side. ऐसे आपको standing form में भी करना है. You have to get up. You have to stand up. Both the hands should be together, feet together. Both hands together, feet together. And you have to go on one side. Inhale deeply. Center, exhale slowly. Inhale deeply. Center, exhale slowly. फिर आपके दोनों पैर को लंबा करना है. Hands को forward करना है. You have to twist yourself. Center, exhale. Center, exhale. तो आपकी upper body को twist करना है. फिर again you have to do on some side. फिर again feet together. आपको inhale करना है. Forward push करना है. Exhale. आपको inhale करना है. Forward push करना है. Exhale. So as you will give movement to your body with the deep breath, blood rotations will go fast and your BP will come up highly up. But make sure before workout, आप workout चालू करने से पहले make sure you have something and then only start the workout. और हो सके तो जब भी आप workout करें, जिसको blood pressure low है, make sure आप अपने साथ नींबू पानी रखें या फिर आप अपने साथ glucose C water रखें, which will definitely help you to maintain your level at blood pressure level while doing a workout. I think so lime water is the best thing which we can keep along while doing a workout session. So उससे हमारी body hydrate भी हो जाएगी और हमारा blood pressure maintain रहेगा सर. It won't drop down. जब हम लोग workout करते हैं while lowering a blood pressure, तो जब हम लोग fast workout करते हैं तो body needs an oxygen, blood needs an oxygen. Oxygen level कम होने से BP low हो जाता है. So if you maintain that oxygenated level, BP will be maintained and make sure you have lime water while doing a workout. Means एक bottle पानी का भर के रखो, उसमें थोड़ा lime डाल दो.
कीप हैव सिपिंग, जैसे हम लोग अभी वर्कआउट के टाइम पे मैंने बोला बीच बीच में पानी पीते रहो, तो वही टाइम पे कीप हैविंग वाटर व्हाइल वर्किंग आउट, which will definitely make sure कि your BP level is normal, sir. Okay, sir? Okay, sir. Thank you very much. So one participant just had a small query. Okay, instead of lime water, is there anything else which can be taken? Instead of sir lime water, I said you can have glucose water, you can have it, vitamin C, glucon D, or you can have just plain water with cumin seeds, जो हम जीरा बोलते हैं. पानी को थोड़ा गर्म कर लो ओवरनाइट. अगर समझो हमको सुबह वर्कआउट करना है तो पानी को थोड़ा गर्म कर दो, बॉईल कर दो, उसमें थोड़े क्यूमिन सीड्स डाल दो, जैसे हम लोग जीरा बोलते हैं, थोड़ा जीरा बोल दो, और जीरा वाटर भी पियेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, आपको एक तो फैट लेवल कम होगा, प्लस आपको मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी को कूल करेगा, आपका वो भी आपका बीपी लेवल मेंटेन कर पाएगा. तो द पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू ड्रिंक लाइम वाटर, दे कैन ड्रिंक क्यूमिन सीड वाटर, जिसको हम लोग जीरा पानी बोलते हैं. बट यू हैव टू मेक दैट जीरा वाटर एट होम. तो जीरा सोडा लेके आके मत पीना आप लोग. You have to make that water at home. So make sure you make that water at home. Other thing, चलो अभी बात हुआ है तो we'll do one thing more, कि जिसको वेट लॉस बहुत फास्ट करना है तो बेस्ट थिंग है, रात को पानी एकदम गर्म उबाल दो, उसमें थोड़ा फनल सीड डाल दो, जिसको हम बड़ी सोप बोलते हैं, उसमें थोड़ा फनल सीड्स डाल दो, अच्छा, जिसको हम बड़ी सोप वलियाली बोलते हैं, जिसको बड़ी सोप बोलते हैं, उसको ओवरनाइट सोक कर दो. वही पानी सुबह डाल के पी लो. पानी आप 1 glass 1.5 glass पी लो. You will get better result to get rid out of your fat. आपका फैट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा. This is the very simple remedy you can use at home, sir. Okay, sir? Thank you very much, sir. Okay, sir. Sir, one more question, sir. Oh, yes, sir. How many minutes should one exercise daily, and how many times a week a person should exercise? Sir, regarding the workout, there is no timing, sir. You can do 5 minutes also, and you can do 45 minutes also. Thing is what, how much you feel now, I am got exerted, you should stop your workout at that time only. You should not over-exert yourself. If you feel that I have done 10 minutes and it is good enough for me, stop the workout. And if you feel you want to do more exercise, go for it, but don't over-exert yourself. I think so best workout is of 45 minutes only, जिसमें स्टार्टिंग में 15 मिनट हम लोग वार्म अप करते हैं और लास्ट के 5 मिनट्स हम लोग कूल डाउन करते हैं. तो अगर हम लोग स्टार्टिंग का 5 मिनट्स 10 मिनट्स हम लोग वार्म अप में डाले और लास्ट का एंडिंग में अगर हम लोग 5 मिनट्स कूल डाउन में कर ले, तो 45 मिनट्स मैक्स वर्कआउट इंक्लूडिंग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा कूल डाउन में, इट्स मोर देन इनफ, सर. 1 घंटा एक्सरसाइज सर बहुत होता है. डॉक्टर ऑल्सो रिकमेंडेड 30 minutes of walk is more than enough. लेकिन make sure when you start the workout, you should do the joint rotation, you should stretch your body, and then you should start the workout. और जब भी हम लोग workout खत्म करते हैं, so again the same should repeat it. But लेकिन this time you should not do the joint rotation. You should do only the stretches, which will help you to relax your muscle. So make sure when you start the workout, joint rotation, stretching, that is included in the warm up. And when you end the workout, it should be with the stretching. Workout, it depends on the user. 10 minutes से लेके 45 minutes, max to max 1 hour is more than enough, sir. 1 घंटे के ऊपर एक्सरसाइज का ओवर एक्सर्ट करके फिर हम लोग दिन भर अपना काम नहीं कर पाएंगे. We feel lazy, नींद आएगा, पेन होगा. So that is not the meaning of fitness. Fitness is what? When you do the workout, you should feel good and we should मेक अवर डे फ्रेश. हमको पूरा दिन फ्रेश फील होना चाहिए, एनर्जेटिक फील होना चाहिए. सुबह सुबह वर्कआउट करके हम लोग डल हो जाएंगे, फिर अपना दिन का काम नहीं कर जाएंगे. तो दिस इज नॉट अ गुड सेंस ऑफ वर्कआउट. इसको वर्कआउट नहीं बोलते, इसको खुद का मर्डर बोलते. इन माय लैंग्वेज आई कॉल इट मर्डर. बट यू शुड नॉट मर्डर योरसेल्फ व्हेन यू डू इन द वर्कआउट इन द मॉर्निंग. मेक श्योर योर डेज गोज वेरी वेल, body looks good, you feel fresh all the day. So that is the meaning of workout from my side, sir. So make sure do workout as much you can take on your body. Okay, sir? Yes, sir. Sir, one more question has come. Yes, sir. Can you suggest some simple exercises for joints? For your joints? Yes, sir. Very basic, simple exercises for Which joints. joint, sir?
So leg joints, everything overall. So basically to just loosen up the joints, which you The suggested. beginning में हम लोग जो भी किया था, this is what simple joint workout only. Still, if you want a simple joint workout for the old age group, see समझो अभी हम लोग ये बैठे, see this is for the shoulder joint. So we can do like sit like this and you just can rotate. अभी दोनों हाथ एक साथ rotation नहीं होगा, किसी को heart issue है तो you can just rotate single workout. This is single hand, ये single hand है. This is single hand you can do. Then you can do like this. You can do like this. किसी को shoulder issues और है, मतलब यहाँ पे pain होता है, तो you can keep your hand like this. You can keep it down. ऊपर नीचे कर सकते हो बैठ के आराम से. In the whole day ये आपके shoulder को काम आएगा. You can do like this on your shoulder. Then you can keep your hand like this. Push it outer direction like this. So this is also very simple exercise which you can perform while in the office also. अगर हम लोग ऑफिस में बैठ के ऐसा कर रहे हैं तो कोई कुछ इश्यू तो नहीं करेगा. While doing a lunch time, it is going to lubricate and help your shoulders also. Elbow को तो हम लोग ये flexible enough करते हैं. This is for the elbow. This is for your fingers. अगर हम लोग कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो your fingers work like this and this. So this is also good workout for your fingers. और chin up and down I said sir. Morning में तो you are doing sir all this hip rotation and all. knee अगर knee हम लोग को सर ऐसे rotation both is not possible. So you can do like this also. दोनों अलग अलग फॉर्म में सर आउटर रोटेशन हो सकता है, इनर रोटेशन हो सकता है. ये भी नहीं जमता, इट इज नॉट पॉसिबल, तो सर खाली आगे जस्ट soft your knees, extend it. Soft your knees, extend it. So this is a simple joint rotation which will help you every day, and it is useful for the everyday workout, sir. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. So another question has come. Okay, how do you lower diabetes by yoga? How can we lower diabetes by yoga? Sir, diabetic by yoga. Good question, sir. But we can just work out. Diabetic is not cured by the yoga, but you have to work on your muscles, sir. When you do workout, your muscles need an glucose. Your liver sends in insulin. Yes, got it. So when you do the workout ना, आपके muscles को glucose चाहिए होता है. Sugar is what? तो liver gives an insulin. जब blood है ना हमारा, वो insulin को catch करता है. So body muscles get converted into the energy. So there is no yoga to control the diabetes. But thing is what? When you work out, your muscles get worked out. Your insulin level, your liver, your kidney functions well. आपका इंसुलिन लेवल जब इंक्रीज होगा ना सर, तो ऑटोमेटिकली योर डायबिटिक विल गेट कंट्रोल. आपके मसल्स जितने काम करेंगे, आपकी बॉडी जितना इंसुलिन छोड़ेगी, हाउ मच इंसुलिन योर लिवर इज गोइंग टू प्रेशराइज इन योर ब्लड, उतना ही आपका डायबिटिक लेवल से कंट्रोल हो जाएगा. समटाइम्स सर व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू ओवर वर्कआउट, आप अगर यू आर इन अ डायबिटिक फॉर्म में, आई गॉट पेशेंट्स, मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो डायबिटिक है, लेकिन जो कंटिन्यूस जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं ना सर, तो उनका डायबिटिक सर ड्रॉप भी हो जाता है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो मेक श्योर आप जब मसल्स को वर्क करते हैं, then only your diabetes is going to get control. Diabetes control करने के लिए सर योगा आसन्स, all yoga asanas are very important for you. Thing is what, अगर डायबिटिक को कंट्रोल करना है तो definitely you have to work on your muscle. अगर मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे so diabetic will get control. There is no specific things which will help you to give you more insulin in your blood. So make sure just work on your muscles. आपके muscles को आप work करोगे, either it can be weight training, either it can be aerobics, either it can be yoga. अगर आप योगा भी करोगे, लेकिन योगा में भी आपका मसल्स वर्क होना चाहिए सर. अगर आपका मसल्स वर्क होएगा तो ही आपका लिवर पेनक्रियास, आपका लिवर इंसुलिन छोड़ेगा, एंड देन मसल्स, आपके ब्लड में वो शुगर नहीं रहेगा, आपका इंसुलिन वो शुगर ले लेगा, एंड दैट विल कन्वर्ट इन योर एनर्जी. सो मेक श्योर यू जस्ट वर्क आउट. देयर इज नो स्पेसिफिक वर्कआउट फॉर द डायबिटिक. Diabetic person can perform each and every workout, but at his level, उनके लेवल के हिसाब से they should do the workout. अगर मुझे डायबिटीज है, even I'm at age of 30, अगर मुझे हाई डायबिटीज है and I'm doing chest press of, मैं एक 10 किलो का डंबल्स उठा के चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो I can go faint because my body is not used to of that thing. अगर मुझे डायबिटीज है तो I can do a light chest workout, शोल्डर मसल्स के हर एक बॉडी पार्ट को मैं वर्कआउट करके I'll try to get my insulin level high, which will definitely help you to maintain my diabetes. Okay, sir?
Right, sir. So there are many questions which are there. Sir, Okay, if sir. possible, sir, can we have your contact number, and if you permit, can we share with the participants so Okay, they sir. can See, address? if you have got any queries, you can call me on just any. Everybody can write my number. My name is Hemant Rathod. My number is 9820 803247. I repeat it. My number is 9820 803247. You can also email me on Hemant Rathod, HEMANT RATHOD, HEMANT RATHOD 3110 @gmail.com. You can also email me on this number. Okay, sir? Okay, sir. We have shared your contact details on the chat box, so participants can get back to you. Right. Thank you very much, sir. It Okay, was hope really you must all motivating. have enjoyed, and my session must have been very useful to all the people who are just listening to me. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much. Have a great Thank day. Take care of yourself. Thank you, Hemant, sir. Bye-bye. Thank you very much. Thank you, sir. We would like to invite Renuka Prajapati, Madam, Vice Principal and Head of Economics Department of MMP Shah Matunga College, who has expressed her willingness to give her views about the webinar. Good evening, everybody. Thank you for giving me this Yes, you asking anything? opportunity. No, sir, I'm expressing myself. I think What, I'm ma'am? audible, sir. I'm Yeah, audible. Yes, Yeah. Madam. So first of all, thank you for giving me this opportunity to express myself. I think this webinar is excellent and neat for the beginning of the webinar, first and today is the second one, with full of positivity, positive vibration, started with prayer, not only for a single person, but Sarva Dharma Prarthana to the peace for the universe. It was an excellent beginning. I could feel it. And all the resource persons invited, which I have participated in, excellent speakers who have given us really good knowledge, and I think it is useful for each and every person in the family and all of us also. It will definitely help us. I really want to congratulate Santosh Madam and the entire organizing team for this 5 days webinar, which is excellent. You have given opportunity to the students, teachers, and also the family and everybody. You have tried to connect on this universe. So thank you so much and congratulations to all of you. Thank you, Renuka Prajapati, Madam, for your encouraging words. Now I would like, thank you. Thank you, Nuka. Okay, sir. I'll take a leave. Thank you. Sir, 2 minutes, sir, please. Okay, sir. Yeah, now I would like to invite Sunita Chauhan, Madam, from Department of Hindi, Wilson College. Madam would also like to express her opinion. Over to you, Sunita, Madam. धन्यवाद. नमस्कार आप सभी को. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, Madam. हाँ, मारवाड़ी सम्मेलन BM रुया गर्ल्स कॉलेज और सीताराम देवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के लिए मैं मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुशील व्यास जी, कन्वीनर श्री श्रीकांत दालमिया जी, सेक्रेटरी श्री सुरेश देवरा जी, सीताराम देवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कन्वीनर श्री विजय सिंगल जी एवं BM रुया गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौर मैडम जी का को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ में आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे सभी से रूबरू होने का और अपने बात कहने का अवसर प्रदान किया. आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में फिटनेस एक्सपर्ट मिस्टर हेमंत राठौड़ जी ने बहुत ही बेहतरीन और रोचक ढंग से ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी. इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यह क्रियाएं जो आज आपने बताई, आसन, महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी ने देखी सुनी, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है.
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभ्यास भी बहुत आवश्यक है और यह याद दिलाते रहने के लिए इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति में तो ये पहले से ही शामिल है। मैंने केंद्रीय विद्यालय से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 5वीं के बाद से ही टाइम टेबल में योगा पीरियड भी हुआ करता था। जैसे विषय की पढ़ाई होती है, ठीक वैसे ही हफ्ते में 2 दिन चाहो न चाहो योगा करवाया जाता था। तब बालपन था, उसके महत्व को समझ नहीं पाया था। बाद में कॉलेज और रोजमर्रा की आपाधापी की दो और भागदौड़ की दिनचर्या में हम व्यस्त हो जाते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है अब भी, खासकर परीक्षाओं के दिनों में जब हम पढ़ाने जाते हैं कॉलेज में, तो होता ये है कि बच्चे आ जाते हैं आधे घंटे पहले और वे आधे घंटे पहले विद्यार्थी आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखकर अपना समय ऐसे ही व्यतीत करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें कहूँ कि भाई अब आंखें अपनी कोमलता से बंद कर लो, इधर-उधर देखने के बजाय, और केवल अपनी सांसों की तरफ ध्यान दो। तो चूंकि जो अनुभव मैंने किया, वो अनुभव अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि वो भूल बैठे हैं, उन्हें नहीं मालूम या उसके महत्व को नहीं जानते हैं। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है जहां मौका मिले उन्हें ये बात बता दी जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाली नहीं जाती है। एक कान से बात कहीं दिल पे भी लगती है, कहीं दिमाग में भी जाती है। तो हमें बोलते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे अपनाते रहें। एक और बात कहना चाहूंगी कि जैसे आहार और निद्रा, खान-पान और सोना, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में योगा भी उतना ही जरूरी है। आहार की पौष्टिकता हमें प्राप्त होने से सुखद नींद मिलती है और सुखद नींद का मिलना इतना आनंददायक होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आनंदमय जीवन का मार्ग योग से होकर गुजरता है। तो योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you, Sunita, for your nice words. It's really motivating to get a feedback from the audience. Thank you very much, madam. जी, जी। Now, I would like to invite Mr. Ramlakhan Pal, Assistant Professor, Department of Hindi, to propose a formal vote of thanks as we conclude today's webinar on fitness for all. Over to you, Ramlakhan sir. मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज एवं सीताराम देवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की ओर से आज के वेबिनार फिटनेस फॉर ऑल में हम सभी ने जीवन में स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण तकनीक और टिप्स को सीखा। आज के वेबिनार के प्रस्तोता द्वारा सुझाए गए सलाह की मदद से हम अपने जीवन को स्वस्थ एवं फिट रह सकते हैं। आज के वेबिनार की अंतिम कड़ी के रूप में मैं रामलखन पाल आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सुप्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर आज के वेबिनार के प्रस्तोता श्री हेमंत राठौड़ जी के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया और इस कोरोना काल में हम सभी को फिट, प्रिटी, हैंडसम एवं स्वस्थ रहने का गुरु मंत्र दिया। हमारे कॉलेज की पूर्व छात्रा श्रीमती कुसुम, जो एक सफल ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, उनका भी विशेष आभार मैं मानता हूं। वे समय समय पर अपने ग्राफिक संबंधित ज्ञान से हमें तथा हमारे छात्राओं को लाभान्वित करती रहती हैं। आज के फिटनेस एक्सपर्ट श्री हेमंत राठौड़ का लाभ हमें उन्हीं के कारण संभव हो सका। कुसुम के पति हैं श्री हेमंत राठौड़ जी, आप दोनों का पुनः आभार। मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष, हम सभी के संबल एवं आधार आदरणीय एडवोकेट श्री सुशील व्यास जी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनकी प्रेरणा एवं सहयोग से हम हर कार्यक्रम का सफल आयोजन करते रहे हैं। साथ ही मैं मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री सम्माननीय श्री सुरेश जी देवड़ा, सम्मेलन के ट्रस्टी एवं कॉलेज के संयोजक माननीय श्री श्रीकांत जी डालमिया तथा सम्मेलन के सदस्य एवं सीताराम देवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के संयोजक आदरणीय श्री विजय जी सिंघल के प्रति भी आभारी हूं, जिनके निरंतर सहयोग से हमारा प्रत्येक कार्यक्रम सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा है। हम सभी की प्रेरणा स्रोत
हमारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर संतोष कौल काक मैडम के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मैडम के द्वारा सतत मिलने वाली प्रेरणा और निर्देशन हमारे प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता की कुंजी होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हम सभी की आधार स्तंभ मनोविज्ञान की प्राध्यापिका एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की मुख्य आदरणीय सुश्री श्रुति रानाडे मैडम जी के प्रति। मैडम के सुझाव एवं सलाह हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय रहते हैं। हम सभी की प्रिय एवं मृदुभाषी कॉमर्स विभाग की प्रमुख तथा IQAC की कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर नूरुजिया काजी मैडम के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विश्व योग दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय योग कार्यक्रम में डॉक्टर नूरुजिया मैडम की कोर टीम के प्रमुख सदस्यों में समाज शास्त्र विभाग की आदरणीय डॉक्टर हेमलता मासीवाल मैडम, कॉमर्स विभाग की आदरणीय डॉक्टर अनीता जयकर मैडम व सीताराम देवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की श्रीमती पूजा रेले मैडम का विशेष आभार, क्योंकि जूम और यूट्यूब लाइव आप सभी के प्रयासों से ही संभव हो सका। आज के वेबिनार के संचालक मेरे प्रिय कॉमर्स विभाग के डॉक्टर गणात्रा कश्यप सर के प्रति सफल संचालन के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं आज के वेबिनार में जुड़ने और उसे सार्थक बनाने के लिए विविध महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, छात्र छात्राओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारा आज का वेबिनार उन्हीं से सफल हो सका। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं ये देना चाह रहा हूं कि 31 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर कल आप सभी से जूम व यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की अपील करते हुए यह मैं बताना चाहता हूं कि कल योग विशेषज्ञ श्री सुखदेव जी शास्त्री से योग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी कल के वेबिनार में आमंत्रित हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन लिंक खुली है, तो कल हम सब मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का पुनः एक बार। Thank you very much, Ramlakhan sir, for your vote of thanks and for intimating about tomorrow's schedule. With this, we conclude our today's webinar for Fitness for All. Thank you very much, all of you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you all.